Hello, Matujima, and watching HORNBILL TV's prime time. Tension gripped parts of Kangpokpi district on Sunday after a convoy carrying essential commodities under central security escort encountered resistance at multiple locations along the Imphal-Tamenglong IT road, resulting in an hour-long standoff before security forces restored movement late at night. The incident came even as the Committee on Tribal Unity (COTU) reiterated its 48-hour ultimatum to the centre and the Manipur administration, demanding the immediate reopening of highways and inter-district road connecting Kangpokpi for the unhindered movement of essential commodities. The deadline expired at midnight on Monday. According to local sources, around 28 vehicles carrying food supplies, medicines, other essential commodities and private passengers including women and children departed from Kangpokpi town under the escort of central security forces. The convoy was first stopped at Tawakining at Liangmai Naga village, located about 14 kilometers from the district headquarters, around noon on Sunday. Following prolonged negotiations, security personnel managed to move the convoy forward. However, it was again intercepted at Tonglang Atongpa, about 5 to 6 kilometers away, where protesters allegedly placed nail traps on the road, puncturing the tires of at least five vehicles and bringing the convoy to another halt. As the day progressed, a large crowd gathered at the site, leading to a prolonged face-off between protesters and security personnel that continued until late evening. After repeated attempts to clear the route through dialogue, security forces reportedly resorted to crowd control measures, including the use of smoke shells and tear gas at around 10:30 p.m. to disperse the gathering and facilitate the movement of the convoy. One woman traveling in the convoy alleged that as the vehicles resumed the journey, some protesters pelted stones and used slingshots, damaging several civilian vehicles and endangering passengers, including women and children. These allegations could not be independently verified. Additional personnel from the Kangpokpi Police, CRPF and the Rapid Action Force were deployed to restore order and escort the standard convoy through the affected stretch. Although the journey normally takes 5 to 6 hours, the convoy reportedly required nearly 24 hours to reach its destination, reflecting the logistical and security challenges involving in transporting essential commodities to remote Kuki-inhabited areas in the Twelang region. The incident comes amid growing concern over the movement of essential supplies in the conflict-affected hill districts. CRPF ko na kan na kuki khoi puraga kuki pot supply to nang kan dor le si thonglang da koi women folks me am thok laga hojik si kan na thing le ne asi mai thari ba gi maning sida CRPF convoy ko jim khai le re CRPF ko na hojik si leader khoi ga wari sa se hai na kaura ga thok li आपका पीछे में आ रहा है क्या दूर है just two officers here main two officers along किससे बात करना है आप लोग का कमांडर इधर आ जा कमांडर आइए आप लोग का कमांडर प्लीज This is the CRPF because you guys are calling us we're here so like who is the responsibility to negotiate whatever the issue we'll do that please come एक्चुअली मुकेश सर से बात हो रखी है इनकी उनको जानते हैं नहीं The Delhi government on Monday approved the Delhi EV Policy 2026 with Chief Minister Rekha Gupta announcing that the policy has received the centre's support and will now be sent to the Lieutenant Governor for a final approval before its proposed rollout from
July 1, 2026. The policy, which will remain in force until March 31st, 2030, places a strong emphasis on scrappage incentives alongside purchase subsidies to speed up the replacement of older pollution vehicles with zero-emission alternatives. The policy aims to transform the national capital into a clean, pollution-free transport hub by promoting zero-emission vehicles. The government estimates that more than Rs 7,000 crore will be invested directly over the next 4 years, while the overall benefit to citizens includes tax exemptions and EV infrastructure is expected to exceed Rs 15,000 crore. A key highlight of the policy is the scrappage incentive framework. Owners replacing BS4 or older two-wheelers with electric vehicles will receive an additional Rs 10,000 scrappage incentive, while three-wheeler owners will get Rs 25,000 and N1 commercial truck owners up to Rs 50,000. Owners of BS4 or older four-wheelers shifting to electric cars will be eligible for a scrappage incentive of Rs 1 lakh. These benefits will be available over and above the purchase incentives announced under the policy. The government has also announced 100% exemption from road tax and registration fee for all pure electric vehicles. For four-wheelers, the exemption will apply to vehicles with an ex-showroom price of up to Rs 30 lakh. सच में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वर्षों से जो असल में दिल्ली की आवश्यकता थी, जो कि दिल्ली की बहुत सारी लीगेसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का माध्यम हो सकती थी, उस पॉलिसी को बनने का, लागू करने का इंतजार अब खत्म हो रहा है। उसका नाम है दिल्ली ईवी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत ये ईवी पॉलिसी जिसको हम 1 जुलाई 2026 से लागू करना चाह रहे हैं, माननीय एलजी महोदय की संस्तुति के बाद, ये 31 मार्च 2030 तक ये पॉलिसी लागू रहेगी और पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है, जिसका जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो, जिसका लाभ दिल्ली की जनता को मिले। और ये सारा का सारा काम हम अगले 4 सालों में कैसे फेज वाइज इसको करेंगे, उसकी पूरी योजना तय की गई है। और ये इस बात का जिक्र जरूर मैं करना चाहूंगी कि इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना होने वाली है, क्योंकि जो डिफरेंस ईवी पॉलिसी ईवी व्हीकल्स में होता था और अन्य व्हीकल के बीच में था, हमने इन सब्सिडीज के माध्यम से उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया है। दिल्ली, मुझे लगता है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो इतना बड़ा ईवी पॉलिसी का फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है, जिसमें ना केवल 15,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, बल्कि फेज वाइज अनकैप्ड हमने व्हीकल्स रखे हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल जितनी जनता लेगी है उतना हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उतना उनको हम सपोर्ट करने वाले हैं। तो किसी प्रकार की हमने इन 4 सालों में कोई कैपिंग नहीं रखी है। जो सब्सिडीज हैं उसके बारे में जो डिटेलिंग है वो हमारी सेक्रेटरी महोदय पूरा बताएंगी, पर हमने इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जो हैं, N1 ट्रक्स जो हैं, ग्रामीण सेवा, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये ईवी पॉलिसी बहुत शानदार तरीके से दिल्ली राज्य को अपनी पॉल्यूशन की समस्या को कम करने में भी मदद करेगी और दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करेगी।
दिल्ली स्मार्ट सिटी के रूप में इसमें परिवर्तित हो पाएगी। मैं सच में बहुत बधाई देती हूं हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह जी को, हमारे पावर मिनिस्टर आशीष सूद जी को और एनवायरमेंट मिनिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा जी को, जिन्होंने एक बहुत मेहनत के साथ एक एक पक्ष पे इस पे काम किया और साथ ही स्टेक होल्डर्स के साथ बारंबार मीटिंग्स करी। हर स्टेक होल्डर का जो कहना था, जो उसके सुझाव थे, इसमें इनबिल्ट किए गए और हर लेवल पे चर्चा करने के बाद इस ड्राफ्ट को हम तैयार कर पाए हैं और जिसे आज हमने कैबिनेट में अप्रूव किया। कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ये माननीय एलजी महोदय को आज भेजी जाएगी और 1 जुलाई से ये लागू होने के बाद हर व्यक्ति दिल्ली का जो है वो दिल्ली में ही खरीदी गई गाड़ी के ऊपर इसका लाभ ले पाएगा। मैं निहारिका जी को कहूंगी कि एक बार पूरा डिटेलिंग हमारे सभी साथियों को बताएं। We'll take a short break. Keep watching. गंगा पुकारे आओ रे, हर हर शंभु गाओ रे, हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, भस्म रमाए साधु चल रहे, गूंजे शिव के नाम। गंगा किनारे दिव्य अलौकिक ओजस पूरा धाम, युगों युगों का पर्व ये पावन, मिलकर सभी मनाओ रे। हरिद्वार में कुंभ सजे, श्रद्धा की डुबकी लगाओ रे। हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे। 14 जनवरी 2027 से हरिद्वार में सजेगा आस्था, अध्यात्म और सनातन चेतना का विराट संगम। आइए इस दिव्य महापर्व के साक्षी बने। Welcome back. The Central Board of Secondary Education CBSE on Monday issued detailed guidelines for implementing the 3-language policy under the National Education Policy NEP 2020 from the academic session 2026 to 27, mandating that students in class 9 onwards study 3 languages, with at least 2 being Bharatiya Bhasha's Indian languages. For the current batches studying in class 7, 8 and 9 would not be required to give board examinations in 3rd language when they progress to class 10. According to the board, students currently in class 10 will continue under the existing system of studying 2 languages with no requirement and for a 3rd language. For students entering class 10-9 in the academic session 2026 to 27, studying 3 languages will be mandatory, with at least 2 required to be Bharatiya Bhashas. The CBSE further said students currently in classes 7 and 8 will continue studying 3 languages as they progress, with at least 2 being Bharatiya Bhashas. Those studying 2 non-native languages have been granted a one-time relaxation to add 1 additional Bharatiya Bhasha as the 3rd language. The CBSE also announced exemptions for children with special needs in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Schools located outside India and foreign students returning to India have been exempted from studying a native Indian language as the 3rd language.
Tripura's economy has registered significant growth over the past 2 years, with the state's gross state domestic product (GSDP) increasing to an estimated rupees 89,682 crore in 2024-25, while per capita income has climbed to rupees 1.93 lakh, officials said on Monday. The figures were presented during the state-level observance of the 20th Statistics Day held at Pragna Bhavan in Agartala. The event was organized by the Directorate of Economics and Statistics to commemorate the 133rd birth anniversary of noted statistician Professor Prasanta Chandra Mahalanobis. According to official estimates, Tripura's GSDP has grown from rupees 70,633 crore in 2022-23 to 89,682 crore in 2024-25. During the same period, the state per capita income increased from rupees 1.54 lakh to 1.93 lakh. As the theme suggests, unlocking the potential of administrative data, all of us can just recollect and think back on the value of administrative data that is being focused starting today and in the near future to come. Today's program is therefore not only a celebration of the legacy of Professor Mahalanobis, but also an opportunity to reflect upon the future of official statistics and data-driven governance. We are fortunate to have with us experts and senior officials who will share their valuable insights on these important issues. Particularly, as an example of the importance of data, we would like to bring before you the portal that has been developed by the Directorate of Economics and Statistics with help and collaboration of NIT Agartala regarding Sustainable Development Goals figures and how it will impact the future development of the state and the country. We will be showing the portal today, and for which we will ask the active participation of our line department officials in self-enumeration, other census activities which is being carried out across the country. Already been told, census, everybody know the census. Every 10 years, census being carried out in the country. And importance of census we know. For what purpose census is being conducted in the country. After a gap of 15 years, census of our country already started. That is called 202 census 2027. It has been segregated phase 1 and phase 2. Phase 1 activities already started in various parts of the country. So far, I am looking after the state of Tripura. I am the Chief Principal Census Officer of Tripura on behalf of the Ministry of Home Affairs, Government of India. Tripura census phase 1 will be conducted already date notified. Statistics department they are the nodal department to coordinate with us. We are always in touch with the statistics, economics and statistics department. Tripura census phase 1 will be conducted in the month of August. From 1st August to 30th August, that is the house-to-house enumeration, house listing activities will be conducted. This is the first time in the country the self-enumeration scope being inducted for the census 2027. People, citizens of the state, anybody in the state, anyone can do their self-enumeration by their own. We'll take a short break. Keep watching. Meet the tomorrow today. ICFI is the bridge between tomorrow and today. Bridge between aspirations and accomplishment. Bridge between I wish to I can.
I will remove the gap. Welcome to the I. I am ICFI, belief called I. I can fly above imagination. Welcome back. Rajasthan and Haryana on Monday signed the long-awaited Yamuna Water Agreement in New Delhi, ending a 3-decade-long deadlock and paving the way for the implementation of Rs 34,102 crore water infrastructure project aimed at redefining the water landscape of Rajasthan. The agreement was signed in the presence of Union Home Minister and Corporation Minister Amit Shah, Union Jal Shakti Minister C.R. Patel, Rajasthan Chief Minister Bajan Lal Sharma, Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini and senior officials from the centre and both state governments. According to a release, the project will transport Rajasthan's allocated share of 577 million cubic meters MCM of Yamuna water from the Hatinikund barrage in Haryana to the Hansiawas Reservoir in Churu district through a 295.5 kilometer underground pipeline network. The project will comprise 3 pipelines, each measuring 3.6 meters in diameter, along with an inspection motorway, artificial reservoir and a modern digital water management system. The project also includes provisions to supply drinking water to 10 locations in Haryana. हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय C.R. पाटिल जी लगातार इस जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें वो जारी रही और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है, उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आपकी संस्था में इसको आगे बढ़ाने का आज MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए, वो बहा करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो MOU साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाने के लिए ये MOU साइन हो रहा है। यह पानी जो राजस्थान में जाएगा वो पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं देता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहाँ खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय C.R. पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ भी कोई संशय की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये MOU साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं आदरणीय भजनलाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। इस यमुना जल समझौते के MOU के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज का ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता और सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV. Good night. Want to build a career in hotel management? Choosing the right career path can be confusing. SIHM Dimapur offers structured hospitality education and job-oriented programs. 3 years degree course in hospitality and hotel administration. Degree awarded by Jawaharlal Nehru University. For the 1.5-year diploma course in food production and F&B service, as well as 6 months craftsmanship course in food and beverage services. The certificates